topic for today's discussion is internal reconstruction of a company. Now let us understand the meaning and definition of internal reconstruction. See, internal reconstruction is the process of changing the capital structure of a company without its winding up. See, here important word is capital structure. And when the capital structure of the company is changed without its winding up or without its liquidation, it is known as internal reconstruction of the company, right? So it is the process of changing the capital structure of a company. Now let us understand what do you mean by capital structure. See, capital structure is nothing but the composition of all the sources of capital of the company. We know that company can issue equity shares to raise the capital. Company can issue preferential shares. Also, company can issue debentures, or company can borrow funds from various sources. Okay, so all these components forms the capital structure of the company. And when this capital structure is changed, it is termed as internal reconstruction of the company. See friends, to understand this concept, I would like to show you the balance sheet of a company and why the internal reconstruction or the reconstruction of the company or a restructuring of the capital is necessary, because this topic is basically related to the restructuring of the capital. Okay, and when capital is restructured internally, it is known as internal reconstruction of the company. Now let us study and understand this balance sheet. Here on the screen you can see the balance sheet. This is the balance sheet I have taken from the university question paper. Okay, so same question was asked in the previous university examination. Here question says the following is the balance sheet of Sitco Limited as on 31st March 2021. Balance sheet दिया है यहाँ पे. So we know that in balance sheet liabilities and assets are there. Here you can observe that here share capital is given, which is of the composed of the preference shares, equity shares, and mortgage debentures are there. So composition of all three elements in the capital is known as the capital structure of the company. See, here you can see the long-term capital of the company is preference share capital 2 lakh rupees, equity share capital 4 lakh, and debenture, that is borrowed capital, 1 lakh rupees. So total capital of the company, capital employed in the business, is 7 lakh rupees. Okay, so this 7 lakh company has raised by issuing preference shares, equity shares, and debenture. Here you can observe that the proportion of debenture is less as compared to equity shares, right? So in this case we can say that a company has utilized own funds, because equity share capital is considered as the own capital of the company. Okay, and mortgage debenture capital is borrowed capital. So here the proportion of the borrowed capital is less as compared to own capital. Okay, so this is the one example of capital structure of the company. Okay, and when this capital structure is changed, it is known as the internal reconstruction of the company. Now see why there is a need to change the capital structure of the company. Generally, the capital structure or scheme of the internal reconstruction is implemented in the company when company suffers losses for many years. Okay, and their accumulated losses become very huge. So here in this same balance sheet you can observe that on the asset side profit and loss account is there, and the balance of profit and loss account is 2,40,000. Okay, and this profit and loss account balance is nothing but the loss, accumulated loss. Okay, we know that when profit and loss account balance is shown on the liability side, it is a profit, and when profit and loss account balance is shown on the asset side, it is debit balance, and it is nothing but the loss. So here accumulated losses are 2,40,000 in this particular example. Okay, so it means company has huge amount of accumulated losses, and because of that the balance sheet of the company doesn't show the true and fair picture of the company. Okay, and that's why the scheme of internal reconstruction is implemented by the company, or because of these accumulated losses only. Okay,
because of these accumulated losses, the reconstruction or capital restructuring becomes essential. Because see, if the accumulated losses are more than equity share capital, then we cannot say that the balance sheet shows the true and fair view of the finances of the company. Okay, okay, so that's why company implements this scheme of internal reconstruction. And the main purpose of the scheme of internal reconstruction is to eliminate all these types of losses. Okay, these types of accumulated losses are eliminated at the time of internal reconstruction of the company, and this is the main purpose or main objective of the internal reconstruction of the company, to eliminate the accumulated losses or fictitious assets. We can use the word fictitious asset. Sometimes it happens that even the value of intangible assets like goodwill is more than the its actual valuation. In that case also, uh, to write off the intangible asset, the scheme of internal reconstruction is implemented. Okay, so basic point is that when the company's balance sheet does not show the true and fair view of the financials of the company, the scheme of internal reconstruction is implemented by the company. Okay, and we have discussed that internal reconstruction is basically the change in the capital structure of the company. Okay, now see, when we have to solve the practical problem on internal reconstruction, generally the arrangement of the scheme is given in the question itself. Okay, in the first part we have balance sheet, and the second part of the question says the following scheme of reconstruction was duly approved by the court. Okay, so this scheme is approved by the court. Okay, it happens that company proposes the scheme and it is generally approved by the court. Okay, so company has to propose the scheme of internal reconstruction. So here you can see the first point says that 5% cumulative preference shares to be reduced to rupees 75 per share fully paid up, and equity shares to rupees 40 fully paid up. Okay, so now uh, first let us discuss about the cumulative preference shares only. So here this sentence says that cumulative preference shares to be reduced to rupees 75 per share. Okay, and fully paid up the shares will be. So here, see, in the balance sheet you can see that there are 2000 cumulative preference shares. 5% cumulative preference shares means, as they are preference shares, they will get 5% rate dividend. Okay, and this rate of dividend will be fixed because they are preference shares. Okay, so these 5% cumulative preference shares are to be reduced to rupees 75 per share. ओके, अगर हम इसे 75 रुपीज पर शेयर रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दी है शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 100 का शेयर्स था, वो अभी रिड्यूस हो रहा है रुपीज 75। ओके, और जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम मेनली ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब एलिमिनेट करते हैं, ये मन पर्पस होता है। तो टू एलिमिनेट दोज एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ सैक्रिफाइस होता है। जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर होल्डर्स है, वो अपना क्लेम कम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट केस में कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिड्यूस टू रुपीज 75 फ्रॉम रुपीज 100। सो पर शेयर 25 रुपीज कम हो रहे हैं ना, तो यही अमाउंट हम ये लॉसेस इलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसलिए आपको शो कर रहा हूं। यहाँ तो हम जस्ट बेसिक एंट्रीज ही डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे शो किया है कि आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाए कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पूछते हैं। क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में मेन क्वेश्चन होता है कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है। Okay, we need to journalize these transactions, or we need to pass journal entries to record these
स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ सिडको लिमिटेड एंड रिवाइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। रिवाइज बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट इस वीडियो में हम सिर्फ जो बेसिक एंट्रीज है, जो मेन एंट्रीज है, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज से 75 रुपीज हो रहे, तो इस पर्पज के लिए हमें कुछ एंट्री पास करनी होती है। और वो एंट्री क्या है, उस एंट्री का फॉर्मेट क्या है, ये मेनली हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं ये क्वेश्चन और जो स्पेसिमन जर्नल एंट्रीज है वो दोनों साथ में दिखाने वाला। ठीक है, अभी ये फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस ही हम देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अभी यही सेम सेंटेंस कहता है कि इक्विटी शेयर्स टू ₹40 फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के, इस कंपनी की इक्विटी शेयर्स है 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी हैज 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट नाउ the equity shares will be reduced to ₹40. Okay, it means equity shareholders will sacrifice ₹60 per share। वो अपना 60 रुपीज से स्टेक कम कर रहे हैं क्योंकि 100 का शेयर अभी 40 रुपीज हो रहा है। ओके, तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में। इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स अपना कुछ क्लेम सैक्रिफाइस करते हैं। ये वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कंपनी को फाइनेंशियली ऐसा अगर सपोर्ट नहीं हुआ इस टाइम पे, तो हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, कंपनी लिक्विड हो जाए या कंपनी वाइंड अप करनी पड़े। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन जनरली एवरीवन इज रेडी टू सैक्रिफाइस देयर क्लेम। ओके, ये होता है। तो इस चीज के लिए हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है होती है, और ये जर्नल एंट्री जनरली फिक्स रहती है। तो ये जर्नल एंट्रीज क्या है, यही हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, फर्स्ट सिचुएशन इसमें आएगा, जनरली क्वेश्चन में जो आता है, फर्स्ट सिचुएशन होता है व्हेन शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंज इन द फेस वैल्यू। इट मींस कंपनी का शेयर कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपीस था, नाउ इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू ₹5 लाख। ऐसे कंपनी ने स्कीम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अरेंज कर दी। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, तो यहां पे क्या होगा है कि व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस। तो देखिए, इस सेशन में या इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपके साथ जर्नल एंट्री जो करनी है उसके कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स शेयर करने जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट है व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस। तो आपको माइंड में रखना है कि जब भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी ट्रांजैक्शन है व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंज इन द फेस वैल्यू। तो एंट्री क्या हो रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सी दिस अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज one of the main account or it is the main account in this topic. Okay, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के इर्द गिर्द ही सारे एंट्रीज होने वाले, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही मेन अकाउंट है इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, जो भी अमाउंट हमने रिड्यूस की है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस विदाउट चेंज इन द फेस वैल्यू। अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो ये एंट्री होती है। एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट मान लीजिए कि 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, वो अभी 5 लाख रुपीस हो गया रिड्यूस करके। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा, 5 लाख, एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5 लाख रुपीस। ठीक है, नाउ लेट अस सी, आई वुड लाइक टू शो यू अनदर एंट्री। हाँ, हमें पता है कि जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना होता है, तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस। नाउ सेकंड एंट्री से व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज चेंज विद रिडक्शन इन द अमाउंट। जब शेयर की फेस वैल्यू चेंज की जाती है, व्हेन शेयर की फेस वैल्यू कम होती है। ओके, व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज चेंज विथ रिडक्शन इन द अमाउंट। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 100 रुपीज का शेयर अभी 40 रुपीज का हो रहा था। तो यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो रही थी। कैपिटल तो रिड्यूस होगा ही, क्योंकि 100 रुपीज का शेयर अगर
₹40 का होगा, तो उतने अमाउंट से कैपिटल कम होगा ना, रिड्यूस होगा हमारा, बट साथ में फेस वैल्यू भी चेंज हो रही। तो इस केस में एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड फेस वैल्यू, जो भी ओल्ड फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू। तो जो हमने एग्जांपल देखा अभी प्रीवियसली, वहां क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट ₹100 से जितने भी शेयर्स हैं वो होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू फेस वैल्यू आएगी, न्यू फेस वैल्यू ₹40 से आएगी, 40 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और जो भी बैलेंस है, डिफरेंस है इसमें का, वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो इस तरह से एंट्रीज होती है, और यही एंट्रीज अगर आपने एक बार याद कर ली, अच्छे से मेमोराइज कर दी, तो आपको इस टॉपिक में मतलब कुछ भी ज्यादा